very hectic at here. Not for this and then still okay. So last time I discussed, okay, recording is on, so let's start. And okay, I'm opening my drive, and so just be here. So last time I discussed about the function, and I hope that you all are comfortable in functions and how to use that. So 2-3 things more. And last time we had some in the last time. In the last time I discussed something on functions and some definitions on function. And today just 1 or 2 more functions in detail I will discuss. And then I will discuss more on that. Okay. So just 1 minute I'm logging for. Some problem in there. Okay, so just Google Drive I'm sharing a minute. Where is my file? Yes. IITP DSA. IITP. Well, so last time I discussed, if you recall, some factorial and detail of that. Okay, so some more 1 or 2 quick parts of that, and then okay. So in that case, the function part I just started. So in what we do in that, basically the important part of any program and problem solving, what we do, we write a system steps to solve a particular problem. And last class I discussed about some program where factorial and some other thing we can create. Okay, and then we can define a different kind of, you can say, a different kind of functions. It's not that always. So functions are very, very important, how we are going to write a function. And that detail, let 1 or 2 examples I will discuss before going to some other part, and that I am sharing my collab file. Sorry. Then I will light screen. My file is visible. Okay. So in function or definitions, whenever you write,
if whenever we write a functions or program, my slides are visible. In chat box you write yes, okay, thank you. And side E I hope fine. So different kind of parameters or value you can find pass out to the kind of various argument which you can pass, and one of these in the functions which we pass is default. What is happening? Default means, so suppose addition function you are defining, always a functions we write def, then add, then we pass a and let 10. So what it will do, so many way to do that. So default, if I am saying either in this way, or you can say b equal to 10, and then return a plus b. I'm running this program, just connecting to the network so that we can run this program. So look, again, just someone said that last time I have some voice problem. So 1, 2, 3, 2, 3 examples I will give first for the function, different kind of, then I will go to the objects, okay, directly, and then the detail part will start. And then we know that once we are ready, we call add, you can pass 20 and then see the return 30. So this is the two argument. If you see the definition of add, we are passing two argument, a which is variable, and b we are fixing 10. Fixing 10 means by default what will happen, now we are calling this add function and we are not giving the b value, only the a value. So by default means b will be taken as 10. And if I say 40, then see, so this 40 will be assigned to 10. So if you are to fix that b will be that fixed value, then you can say b equal to 10 and you pass anyone, or if you write like this, so it will be override. So this is known as default parameter passing, and the default parameter value. So like the country name and something for a person is not a variable. Your travel and different locations, maybe if you are traveling, is a variable, but this may not be. So you can pass like this. Even default parameter, you can pass list as an argument. So another code, and you can pass what it means. So for any function input में क्या देना है, एक ही नंबर देना है, वेरिएबल देना है, या कोई लिस्ट means collection of elements. So you may pass collection of argument also in the list. So you are defining def my fruit, you can say, and you can pass food, and then you can say for I in food, then
print I. And so what happened, the food is in list, or food कर लो, fruits कर लो, जो भी देना है, that we have to pass. So now I am defining as a fruits. Food कुछ भी सकता है, हमारे पास fruits हो सकता है. And then you can define your string, and this string could be like banana, orange, apple. If you run, okay, call तो किया ही नहीं ना, so you have to call that ना, my fruit. Banana, orange, and L. Point is not so. For many, just brush up. We may write a different kind of function. You may create your dictionary word. You can create like this. So many functions you can write like this. So okay, not a problem. So you can create, and you can do that. Many way. I hope already you have studied. So one or two more examples on this I will discuss. And look at this. Okay. One more example is, you can say, you can pass keyword argument. And what has happened, if keyword argument if you will give, then no need to remember the name, order of the, otherwise you have to, if you are not giving the keyword, then you have to remember the order of the variable, which one for what task you have done. Or otherwise round, you can say that, okay, why I will do that, and I will use as a keyword. For example, you can say passing values in a function using keyword. What it means, you can say, you can define, and this you can define for any student list you want. You can say my function definition is this, and here I can say first name and then surname, and then I say that print. Okay, what I can do that the print first name and last name कर दो, surname कहो और last name कर दो, no issue. Then print, पहले फर्स्ट नेम को पास कर देंगे एंड फिर लास्ट नेम को. अच्छा ठीक है, कर देते हैं. Then last name. Okay, then what happened, you call this function, you call any student. I'm taking a name from this, name from anyone from your group. I am taking Aman Kumar का नाम ले लिया. Aman Kumar is visible in my, okay, okay. Many are trying, I was seeing that DeepSeek
use DeepSeek. Okay, and that's the challenge for you to be learn a programmer, to be a programmer. Okay, so if you say student, and which student I picked name, I said Aman Kumar. Let it be. I'm saying I'm not remembering. If you see the function written as first name as a and then last name, but deliberately जानबूझ के मैं पहले कुमार लिखता हूं, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, इसको प्रिंट करो तो क्या आएगा? स्ट्रिंग ना, कुमार अमन आ गया, जबकि पहला नाम तो अमन है, but I have not taken care of this. So what is happening? The order matters if you are not using the keywords. Okay, order matters in that case. Otherwise, how to solve this problem? So in that way, whenever I am calling a student, I will say that, okay, whenever I am calling, I will say this is the last name, okay, equal to Kumar, and I will say first name as Aman. And now if I print, so this is Aman Kumar. Okay, so if we are passing the argument in any functions, any program, and if we are using the keyword, then that keyword will take care of that, and by default it will do that. Same way we can pass positional argument. One more one before going for the class. This is now I will talk about what do you mean by positional argument in this. So let's see that one more case. Though again I am saying it's trivial if knowing if you are using deep fake or DeepSeek or any chat GPT, more trivial all these tasks versus building the block. Don't use too much. Otherwise you may not able to understand the basics part. We are not talking about the advanced topic on this. So let's on this. What I'm saying that positional argument, how to do that. I want to, what do you mean by positional argument? So there are many things. I am assuming that you all are knowing, but this is the last discussion I'm giving on the functions. But every time the functions we are going to define even in the class, and whenever we use, you may see that, okay, how we do that. So let one more. Suppose we want to define positional argument. So let's, I will do that. Okay, let my detail you create a definition of my detail, and in this I will pass basically two things, name and age. And then I will do print I am and then ये पास कर दिया. Let's see that name and
Now I am calling this my detail, and just I pass 20 and Aman. What will happen? Just see. Aman is a string now. I am 20, my name, my age, Aman. Where is the problem? This is taking as positional argument you fix. So what is happening? We are not using the keyword. And since we are not using the keyword, जो first position है वो first print में चला गया, तो हमने order matters करता है यहाँ पे क्योंकि keyword नहीं यूज है. So what will happen in this case? इसने क्या किया 20 को name कर दिया और अमन कर दिया my age अमन. So in that case we can say okay I will use यहाँ पे मैं keyword use करूँगा. Okay, and then I can solve this problem. But this is positional argument, so keyword से solve करें. This is the positional argument, means जिस जो position पे है उसको ले लेगा name पे. So if I do like this, Control V, and this, then what happen? If you run, I am Aman and my age 20. So there are multiple things which you can define. Okay, and that way we can work out. So these are the some functions properties. So you all those who are have not so much knowledge, do some practice and try to solve. Here with now, I'm going to start classes and objects in Python. And Python itself is an object-oriented program language. And everything is an object. With what is the idea? Functions to ho gaye. And then why we need an idea? Why the class and objects we need it? What we can do with this? And why this class is basically. So let's run down your knowledge. Those who are knowing, I'm going to the basket. Anyone would like to define? Or any have a question then? Otherwise, you just define that. Taking at the idea, you all are aware functions, some topic of the functions I have discussed. Now, class and objects. What is class? Okay. 68 per 1? No, sir. I'm not getting what you are saying. Don't copy and paste. Meaning, intuitive meaning बताओ कि class किसी को बताओगे तो कैसे समझाओगे? Copy paste chat GPT. Copy paste definition नहीं. क्यों चाहिए? Class is like mobile. No. The example class is like mobile and object is like models and company. No.
What are classes in? Class is something which are belong to. Okay. Okay, some example is going good. Harsa is saying that bird and parrot, okay, which is one class. Okay. One synonym is catching up. Like class having problems, class having solution, class blueprint, ठीक है. Some objects, ठीक है. Good. Class is set for user defined element. Class is user defined element होता क्या है? हाँ, ठीक है. Okay. So one example that one person, when someone have given that. Okay. Collection of objects. Okay. So like what we needed and why we needed in the especially in the programming, like a certain task, like someone have given a birds and then you can say parrot and all. Okay. Otherwise, you can say like a car and then you car can say which color, wheel, and all the functionality of the car. So what is needed? It's a class, you can say a bigger umbrella of set of definition or functions we need, like student enrollment at IIT Patna. So you can say, or your bank account in a particular bank. So if I say you as a customer in there or as a student at IIT Patna, then what happened? As a student, okay, then a student some information, your enrollment number, your family details and all. So for we need one definitions or one program for getting your family definitions. Then I need one other program, set up program for your coursework, what you have studied. And then we need another program to calculate something grade and all. So with the umbrella of student, multiple tasks. And for each task, you can define a certain different program or function for this, function for B, function for C. So the class you can say to solve a bigger problem. Okay. Or someone said that blueprint for creating objects, and objects are multiple tasks you can say which you want to do with the students detail or your bank account में क्या होगा verification, and then you can see that different functionality comes out. You can transfer money from one account to other. If you go online, different button comes out, so you can say that is object, and behind that some programming are there. So for that, other card payment, alag insurance, alag credit debit also alag. So different functions and line you can write. So those functions and definitions. So all these comes out as a in the class. How it helps us basically create a class and object oriented programming है क्या? You treat, if you want to solve a bigger problem, we create different objects and then we combine them to solve the problem rather than everything from the scratch. So what you do don't do ChatGPT, or if you are using also to try to understand what is class and object in any program. Objects are subset of class. That's what I'm saying. For every class have some objects, some task you can say. So some object, some task you can say now. I'll give that. Voice still my voice is not clear.
People are writing. Am I audible or not? No clear, sir. Hmm. Okay. No problem. You are okay. So the class is a blueprint, you can say, creating objects. An object, then what is object? So in the blueprint, like स्टूडेंट में क्या क्या स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है, आपका जो ईआरपी सिस्टम होगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, या बैंक में अगर अकाउंट है तो आपको क्या क्या एक्सेस, क्रेडिट, डेबिट, transfer of money here to there, other credit card, another detail, your transactions details, which you can see. All these attributes which we have to blueprint, you can say skeleton. Skeleton you can say, suppose as a student portal आपको बनाना है, as a student information IIT पटना को रखना है, what they need. So overall blueprint that we can say is a class, is a blueprint means as a student what information IIT Patna needed. As a student database, what they want a class, then your name. So your address could be one. Okay. And then your address include a mobile phone of everything. Then your courses, आपने क्या क्या subjects पढ़ लिए. Roll number will comes out in that also. Student, so student could be access through the roll number. Each one that we create, that once we create now, it's a template for an object. So that I will show through the examples also so that you can understand. Like student की ये प्रॉपर्टी हो गई. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट कुड बी लाइक जो रोल नंबर से हम एक एक को साइन कर दें, तो अमन कुमार का, निहाल का, सबको हम उसके बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट, तो होगा क्या, एक एक इंस्टेंस हो जाएगा वो उस क्लास का. स्टूडेंट में ब्लूप्रिंट होंगे कि स्टूडेंट को क्या क्या डिटेल चाहिए, उसका रोल नंबर, उसके उसके एड्रेस, उसका देन द अदर डिटेल्स लाइक योर कोर्सेज व्हिच यू हैव कवर्ड, हो गया. देन कितने ऑब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट हो गया, अमन कुमार, अमन कुमार को वंस द क्लास बना दिया ऑब्जेक्ट की तरह, तो अमन कुमार से डॉट से हम सारे डेटा को उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका डिटेल क्या होगा क्या होगा. हर स्टूडेंट का वो टेम्पलेट चाहिए ना. The template student is showing what kind of attribute or features student have. And Aman Kumar is one instance of that class. Aman Kumar is a student. Then Nihal Sharma is also a one student. Sasank Bharti is a student. So once we assign that class created or assign Aman Kumar को, तो अमन कुमार की वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले लेंगे. I will come up. Yes, yes. Class you can say collections of template or attributes and methods. क्या क्या एट्रीब्यूट है, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है वो क्लास, स्टूडेंट का क्या क्या स्टूडेंट एक्टिविटी कर सकता है, क्या क्या डेटाबेस में आप स्टोर करेंगे. एक बार क्लास बन गया, उसके ऑब्जेक्ट अमन कुमार बन गए, तो विथ अमन कुमार एक्सेस टू स्टूडेंट वो सारे इंफॉर्मेशन अमन कुमार कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बंडल आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आपका अमन कुमार का एक अकाउंट है, निहाल का अलग अकाउंट है. सो वंस यू लॉग इन, सो आपके लिए लॉग इन के बाद वो सारा कुछ एक्सेस है, वो सारे क्लास, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो उस डैशबोर्ड पे आपको दिखता है वो आपको एक्सेसिबल है. वो ऑपरेशंस वो सब कुछ कर सकते हैं जो अमन कुमार और निहाल कर सकते हैं. सो निहाल एंड अमन कुमार में बी वन ऑब्जेक्ट्स which have the property of the class, you can say bank account detail. So class is a bigger, you can see the like calculator, you want to do that. So using the class also you can define. Okay, so I will give that example. Look, let's come there. Just 1 minute. We
Okay. So what I was saying, the class part. So how we can create a class in the Python, and if I can create, then how we can use and define. So what are the properties, how to create. So all the properties and other part we have to define. Okay. So for example, one or two I will discuss. Just see that one example. Then I will just one class I will create. Object, no, objects are not. Objects are, you can say, within the blueprint. Sorry, objects are not attributes. Each objects have the all attributes of the class. Okay. Attributes are, you can say, what will be there in the blueprint. Blueprint is a collection of attributes, you can say. उसमें होगा क्या? Okay, let's create through example 2, 3, 4 examples I will discuss. So then one example, then two, then you understand. Okay. 1 minute. I'm coming on my. Someone is pasting. And that's what I start coding, generating AI. Don't use Gen AI. Someone have pasted that class and object. Each object have all the property and access of class. So let, for example, पहले वो कैसे बनाते हैं? पहले जो है एक क्लास, देखो, let's start with the basic and then you understand. Okay, छोटा सा एग्जांपल. क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये वर्ड यूज किया, क्लास. कीवर्ड इज क्लास. कीवर्ड class used for creating class. इसका नाम ही है क्लास. उसका नाम देंगे, कुछ भी नाम दे दो. पहले क्लास ले लें, उसका मतलब क्या है. तो कुछ भी क्लास डिफाइन कर रहा हूं, तो मैंने कहा माई क्लास एंड देन कहा मैंने y इक्वल टू 10. कोई एट्रीब्यूट नहीं, बस इतना ही है. इसको ऊपर कर लेते हैं, रोज प्रॉब्लम कर रहा है. वंस क्लास बन गया, ये है क्लास बनने के बाद. क्लास के लिए तो ये क्लास का नाम और कॉलम, ये है सिम्टम. उसके बाद y इक्वल टू 10 बनाया मैंने. उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट तो बताओ. तो जो क्लास का नेम है उसको यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. सो फॉर क्रिएटिंग object we will use class name, my class. मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कुछ नाम देंगे. अब ऑब्जेक्ट्स माई क्लास है तो A1, A2 या कुछ भी नाम दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से S1, मतलब स्टूडेंट 1, और मैंने
क्लास का नाम दे दिया माई CLAS. इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इट विल डू? इसका मतलब ये होगा जैसे ही किया कि जो प्रॉपर्टी इस क्लास की है वो S1 पे सब पे साइन हो गई. ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट विल बी ऑन S1. व्हाट इट मींस, अगर प्रिंट करोगे S1.y, मतलब S1 जो है ये जो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज. एक बार बैंक अकाउंट खोल लिया तो अपने अकाउंट से सारे ऑपरेशंस आपको मिल लेंगे. अब इसको प्रिंट करते हैं तो 10 आ गया. सिमिलरली हमने कह दिया दीज आर द वेरिएबल. अब वहां पे फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं. z इक्वल टू 20. सो व्हाट S1 कैन डू, मैं बार बार वो सारा y और z की वैल्यू S1 के लिए अलग से डिफाइन नहीं करेंगे. वी कैन से पहले क्लास ऑब्जेक्ट नेम, हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट नेम. तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है, S1 डॉट z. सो S1 डॉट क्या यूज करना, S1 डॉट दिस, S2 डॉट दिस, इससे ही कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा. दिस पार्ट यू हैव टू बी केयरफुल. हाउ टू कॉल दिस वैल्यू, 20 आ गया. इफ आई से प्रिंट S1 डॉट y प्लस S1 dot z, then what will happen? 30 आ गया. So through S1 we can access the properties of all these things. Okay. This is known as simple one. The class y10. But this is the simplest form. अब वो सारे definitions और वो सब कैसे assign होंगे, that I will tell you. But before that I will check any query. Structure, okay, many are knowing C, C++, everything. Yes, C and then C++ structure, and structure with some more property, it comes out class. It's not to look like function will also be the part of this. Okay, functions will also be the part of the class के अंदर आप functions भी define कर सकते हैं. Someone is saying is the like structure more property compared to structure, so structure minimum, you may feel that for understanding purpose. Yes, object have all the attributes of the class. Yes, now static and dynamic part later on I will say why we. It's like a function and function. Where is that? When I am saying it's a bundle of functions. Okay, it's a bundle of functions. It's not a function. It's a bundle. So many functions you can define, and those functions you can assign to all the objects. So all the, like S1 can call all the, as an object call all the functions defined in the class. S2 call all the functions defined in the class. It's object oriented. So object oriented क्या है? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, क्लास बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट करेंगे, and then we will play with the objects. Later on, little complex problems, I will then you more can make our own library using. You can make it. Yes, you can make it. Yes, you can make. Voice is not coming, but others are able to listen.
I don't know if thumbs up means. Am I audible or not? Many are saying voice is clear. So you take 1 minute and do this. Check it. Let's I'm here. 1 minute. Stop. Check all others. Many are saying yes, no, yes, no. So other those where I'm not audible, you just rejoin. I'm just stopping for 1 minute. You rejoin. Take 1 minute and rejoin. Yes. Okay. So let's move on. One more example I will discuss, and then one important functions which we define, especially in this, that I will talk about the init function about this. So just a minute. I will talk about double underscore init, okay, double score this. This is known as init function. I will talk about this init function, okay? And very powerful, very much useful. And we use this especially to initiate let's see that I am 1 minute. So each class we can create this init, you use this init. It's basically automatically it initialize all the objects attribute when object is created. So what it does, how to use it, I will tell you. It basically
फॉर एग्जाम्पल इसको करते हैं, तब then it will be better understandable, and then more complex part I will discuss. So one example you can say, बेसिकली सभी क्लास जो बनाते हैं और सब में ही हम ऐसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया, शुरू किया, एक प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा क्लास है स्टूडेंट, इस क्लास का नाम ही मैं देता हूं स्टूडेंट। ये तो सिंटेक्स हो गया। इसके अंदर हम टू इनिशियलाइज ऑल, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्टूडेंट है, जैसा ही ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम और एज उसमें आ जाएगा, उसको पास करोगे वो उसमें साइन हो जाएगा। जस्ट लिसन, नेम एंड एज को असाइन करना है, तो आई विल डू दैट। सबका अलग नेम होगा और सबका, उसको कोड कैसे करें, जैसे अमन का फर्स्ट स्टूडेंट है, उसका मान लिया S1 रोल नंबर है, 1 2 3 1 इज रोल नंबर। सो व्हाट आई वांट, लुक बिफोर, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, जस्ट सी दैट हाउ वी थिंक आउट। आउटपुट वी नीड दैट जो S1 है, फर्स्ट स्टूडेंट जो भी है, एट S1 इज ऑब्जेक्ट ये है, वी नीड S1 नेम्स एंड एज, इसका चाहिए। फिर ऐसे ही जब मैं S2 करूं तो S2 का नेम एंड एज चाहिए। इसका प्रोग्राम कैसे बनाएं, सारे स्टूडेंट का नाम और एज हो, उसका प्रिंट कर लें, हम कर लें। सारे ही स्टूडेंट को S1 अपने आप कर दें। तो या तो तुम प्रोग्राम बनाओ कि सभी स्टूडेंट का अलग से, स्टूडेंट नेम इक्वल टू अमन, स्टूडेंट एंड अमन एज इज दिस, देन स्टूडेंट नेम इज रमन, रमन एज इज दिस। बार बार हर किसी का नाम और एज अलग अलग से ले लीजिए और प्रिंट कीजिए। So you just see that how to create that कि स्टूडेंट S1 है, उसका हर, तुम्हारे पास जितने इसमें स्टूडेंट है सबका नाम और एज प्रिंट करना है। How you can do that? Right now around 500 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नेम एंड एज हमको लेने हैं। एक प्रोग्राम बनाओ, इसका नेम एंड एज सभी का, कैसे करोगे, How we can do that? I want to collect and print name and age of all the students of this. How we can do that? Okay, init तुम पहले यूज कर दिए। So that's the class example. Either you know the class, okay? Okay, many have done this. Okay. Okay, those who are knowing, then okay. All the others who are not knowing, so you have to think that why we need a class. Okay. Why we need a class. And that thought process will, you have to think that. That's what I'm saying, that the reverse way. हमें चाहिए. So how I can do that? So I will create this definition and then init को call करो. And then self, मैंने कई लोगों ने लिख दिया, बट मुझे लिख लेता हूं। सेल्फ कुछ हो सकता है, जिसको जिसको ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सेल्फ बनेगा, सेल्फ डॉट नेम। बाय डिफॉल्ट ये होगा सेल्फ डॉट नेम। कैसे इसको कॉल करें, एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इतना करने के बाद अब हम करेंगे S1 ये स्टूडेंट, जैसे चाहो कैपिटल S1 से कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, S1 इज ऑब्जेक्ट, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट हम पास कर दो, क्या है स्टूडेंट का नाम,
बाय डिफॉल्ट किस सीक्वेंस में पास कर रहे हो, ये देखो। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, इसमें ये फीचर्स पास, सेल्फ मतलब कि जो भी S1 S2 है तो सेल्फ को पास नहीं करेंगे, नेम, सो नेम इज अमन, एज 20, ये हो गया S1। ऐसे ही करो S2 इक्वल टू, you can say student, then other student name I will pick from your list। अमन तो बहुत हो गया, इसका नाम आ रहा है निहाल, 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 देन एज 21, दो स्टूडेंट का लिस्ट बन गया। नाउ जस्ट सी दैट निहाल, अमन, ऐसे ही आप जितना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, S1 S2 कर देगा। प्रिंट कैसे करेंगे, हाउ टू गेट डेटा, ये तो असाइन हो गया S1 S2, it is object of this class, okay, and this is also ठीक है, it is another object in the class, of the class, in the class नहीं। अब हमको डेटा लेना है, कैसे ले लेंगे, तो प्रिंट S1 डॉट नेम, ठीक है, देन प्रिंट S2 डॉट नेम, रन करते हैं, नेम ही लेना है, क्या लेना है, अमन है निहाल, ठीक है, S1 डॉट नेम अमन निहाल। हम आपको नेम चाहिए तो नेम आ गया, आपको एज चाहिए तो एज आ जाएगा। सो पॉइंट इज दैट क्विकली यू कैन नाउ इजिली ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं सभी स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बना लो और सारे ये इंफॉर्मेशन क्विकली, ये टेम्पलेट बन गया। दिस इज द ब्लूप्रिंट, दिस इज बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ स्टूडेंट, नेम एंड एज है, और भी फंक्शन ऐड करते रहेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म of this where you can add name and where you can add age, okay। Okay, so this is the example. You can simple class you can create using now. Okay, anyone have any question? Just I'm seeing. No one is asking.
अब ना सर ऐसे कैसे कितने, तो नो राइट ना यूजर इनपुट ऐसे नहीं लेंगे, दैट्स डेटाबेस एंड दैट्स आई एम नॉट गोइंग, आई एम जस्ट कीपिंग यू, फाइल से ले लेंगे, फाइल से लेके पेस्ट कर देंगे, दैट्स ओके, डिफरेंट पार्ट। माय पॉइंट इज दैट क्लास बनाया तो P1 से लेके वो माई नेम डॉट इजीली एक्सेस हो जाएंगे सारे ही। आई एम नॉट गोइंग कि इसकी लूपिंग डेटाबेस ऑटोमेटिक हो जाए, फाइल से डेटा चला जाए सबका, या दैट पार्ट। सेल्फ इज यू कैन से टू, it's a parameter basically, and you can say the syntax for this program for class, इसमें एक सिंटेक्स सेल्फ डिफाइन कर देते हैं, इसके थ्रू उसको हम सारे वेरिएबल ऑफ द क्लास को एक्सेस करते हैं। क्या प्रीडिफाइंड है? सेल्फ स्टोर डेटा तो है नहीं अभी, अभी तो स्टोर कर दिए। तो सेल्फ नेम एज, नेम कहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन होगा, जैसे आपने नाम दिया ना जॉन और नेम, तो हर किसी का अलग अलग वो टेम्पलेट बना के सेल्फ का वो करके, आप सेल्फ का बिना करो, हर एक्सपेरिमेंट को करिए तब भी होगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो, इससे बाय डिफॉल्ट इन दैट, इवन इफ यू नॉट, इससे बाय डिफॉल्ट डिफाइंड। ओके, दिस इज द बाय डिफॉल्ट ऑफ init फंक्शन। यू रीड अबाउट init फंक्शन फर्स्ट। देखो क्या हुआ, ये असाइनमेंट हुआ ही नहीं, हमने सेल्फ हटा दिया, तो विदाउट सेल्फ इट इज नॉट, इट्स रेफरेंस टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब जैसे ही तुमने, जैसे मान लो यहां लिख दो सेल्फ, सेल्फ क्या किया, तो S1 में ऑब्जेक्ट बनाते समय स्टूडेंट अमन में, तो सेल्फ अमन को लिया, इसने क्या किया सेल्फ डॉट दिस में, तो अगर ये सेल्फ क्या कर रहा है, अमन के लिए डॉट नेम और उसके लिए एज यहाँ स्टोर हो गया, तो दिस इज यू कैन से S1 डॉट नेम एंड S1 डॉट एज। हमें मालूम नहीं कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, सो दिस सेल्फ इज S1 डॉट नेम एक्सेस, S1 डॉट नेम कैसे आया, आपने तो साइन नहीं किया S1 डॉट नेम में कुछ भी, सेल्फ डॉट नेम पे किया था, बट द मोमेंट यू क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड, S1 डॉट नेम पे ये सेल्फ की वजह से, मतलब इस करंट इंस्टेंस S1 की बात कर रहा है, स्टूडेंट बना, और सेल्फ मींस दिस S1 के नेम और S1 के एज, फिर S2 के नेम एंड S2 के एज, this self is controlling this, so this is predefined syntax for init function in class for Python. Okay, use it and see that यहाँ सेल्फ की जगह क्या नाम है तुम्हारा, वही कर लो, किसका क्वेश्चन था, उसी को लाते हैं बोर्ड में, रोशन, दैट्स ही रोशन। चल गया, अमर ने निकाला गया। ओके, तो दिस इज ट्रीटिंग एज रोशन, जैसे ही आपने डिफाइन किया इसको, तो रोशन को S1 पे चला गया, तो दिस रोशन मींस S1 डॉट नेम S2 डॉट नेम, S2 में, so that's what self रोशन, so जनरली वी कीप सेल्फ, जिसे समझ में आए, अदरवाइज रोशन से कंफ्यूज है कि एक और स्टूडेंट, सेल्फ मतलब S1 के ही बारे में, S1 एक सेल्फ ही वेरिएबल नेम हो सकता है ना, ये तो एग्री करते हो, तो इसके लिए किया है। ओके, you got this point, come back. Any questions, others have any query?
C plus V, I'm not getting. Okay. Any query, please? Okay. But also so the whole idea is that once object created, directly you cannot access. So p1 dot age or p1 dot name is important. So through object only you are able to access the informations, and through object only you can modify the value, you can delete the value. Directly you cannot say that ki name Roshan or something Aman name and delete it. You cannot do that. S1 have access to the detail of Aman. So through. Yes, in it always double underscore before and after. That most of the time you do the error. Those who have not done in it double underscore before and after both is double underscore. Double underscore you need to apply. So you can create, you can delete. Also, like for example, this is known as this is basically known as instance variable. कौन कौन से है इंस्टेंस के वेरिएबल नेम एंड एज, जो भी इंस्टेंस S1 S2 और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं. You can also define some things which are say college name. Okay. EGE, I am saying IIT Patna.
what happened? This is also a variable, but this is fixed. How we can access if I say that student to ban gaya hai, and if I print s1 dot name and then print s1 dot college, and then I can say print college. प्रिंट करो भाई, क्या आता है? अब कॉल कैसे करें? S1 को एक्सेस तो नहीं करने दिया। यहाँ गड़बड़ हो गया, कैपिटल हो गया मेरे साथ, इसलिए एरर हो गया। अमन IIT पटना, निहाल IIT पटना. So some variables are you can pass and modify. Okay, but this variable, suppose whenever you initialize, you can modify the name and add to the this S1 to the this Aman and 20. But college IIT Patna is defined this. This is not the property of self. So this is not the property of S1. This variable you can add and delete, but this is a, you can say, class variable. So class variable you cannot change, or class variable you can access through this. You can say that, suppose if you want to modify the age of Aman, so you can say, for suppose you want to modify age of Aman. So what I can do, S1 dot किसको करेंगे, age equal to 22. Now print S1 dot age. क्या आएगा? 22 आ गया. ठीक है. So this has been modified. Now if it is a instance variable, through object we are able to modify and change. If instance variable, if you want to change, through object you can change. Now can I change the college name through this? Let's see. Can we modify college name by objects? In this case college name हम change करना है. अब S1 dot college equal to, change कर दो. अच्छा नहीं लग रहा? IIT Delhi and print S1 dot college. देखो, so S1 dot college को भी हम इसे चेंज कर रहे हैं. इसको रोक रहे हैं, इसको ये चेंज ना कर सके, ये मॉडिफाई ना कर सके. अब S1 dot college is IIT Delhi. Now print S2 dot college. This is IIT Delhi and this is IIT Patna.
So student have that access. So can we control this? So क्या करेगा, क्लास 1 का इसका भी वेरिएबल चेंज कर लेगा. But this IIT Patna and all, we are not passing in during assignment. But we can modify through this. Now can I control this कि public private later on I will take. कब public बनाए कब private बनाए जैसे C++ में होता है. Can we control कि एक कोई change ना कर पाए object? That's a different part. But right now what is happening during assignment, we are not passing the value of IIT Patna. College fixed. But later on, once object has been created, this object can modify this class variable also right now in this format. Okay, so right now what you do, those who are knowing good, not knowing, you do some practice, understand what kind of object we can create and what we can do addition, modification through objects in the class general database. That part you must understand. Then we move to the next topics. Okay. So I hope it is clear. 7 बार 7 1 बार 8. During the assignment, we are not passing the college name. We fix that. So no need to. This global class variable में IIT पटना सभी का है. So no need to take this information pass कर दिया. Name and age सबके variable हैं. But that also you can change through this. Other usage later on I will discuss. Class variable, instance variable. Instance variable means those variables during creation of objects, that variables you are passing to that. उसको पास करना पड़ रहा, मतलब S1 बना रहे हो तो उसका नाम देना पड़ेगा अमन और एज. अब इसको नहीं दिए तो क्या होगा, क्रिएट ही नहीं होगा. तो दिस इज नीडेड. ओके, that's what we did. Okay, so you just give some time when a query. Let's. Okay, so with this today I would like to stop here. Okay, let's, any query further? No. Okay, so I am stopping the recording and I will start and we'll meet tomorrow.